बच्चे आज हम बड़े ही तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे दैट इज कॉस्ट यूनिट कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट सेंटर व्हाट इज अ कॉस्ट यूनिट cost unit is defined as unit of the product or the service in relation to which cost is measured. Cost unit is the unit of the product in relation to which cost is measured. In a simple words, we can say it is your measuring unit. The final output is your cost unit. जिसमें हम अपनी फाइनल आउटपुट को मैयर कर रहे होते हैं दैट measuring unit is known as cost unit. It may be kg, it may be dozens, it cost unit varies as your production varies. Brick mining, for example, for the brick mining company it is 1,000 bricks. For the cement company it may be tons of the cement. Cost object, any activity for which separate measurement of cost is required. When we define the cost object, we said it is a simple work or an activity where separate cost measurement is done. For it may be the cost of a service, it may be a cost of product, it may be cost of operating a department. Cost center. When we define the cost center, these words are common in average definition: functions, locations, operations, machine, where cost is incurred. Cost center is mainly involved in the production. Our main cost is incurred in the production cost centers, that is cost centers. Cost center may be a geographical area, item of equipment, a person, or the salesperson. Now, cost unit is clear, cost object is clear, cost center is clear. We will discuss our practice on it. Now, question is complete the following table by classifying each expense correctly. Production, selling, distribution, administration, finance. Production. Production cost is equal to, your production cost is equal to prime cost plus factory overheads. Selling cost includes all the selling expenses, sales commission, sales discount, salesperson salary, any kind of early settlement discounts all are the part of the selling expenses. Distribution expenses relate to the product from the finished good warehouse to the sale, that is distribution expenses, delivery driver salaries, delivery vehicle maintenance expenses. All these are the charge in the distribution head. Administrative expenses, these are the common non-manufacturing or the office expenses, rent, depreciation of office building. If the word office is used, all those expenses becomes your administrative expenses. Finance relate to the raise of the capital. Finance expenses are the interest on overdraft, interest on the bank loan, that is the finance expense example. Now, overalls for the machine workers. Word machine worker is used. It means it is your factory related expenses and it is part of your production cost. So we will classify under the head of production cost. Cost of printer cartridge in journal office. Journal office, word journal office is used, then it is classified in administrative expenses. It is not your selling expense. It is not your distribution expense, not finance expense. It is charged under the head of administration. Word journal, common. Whenever any common expense incurred which relate to the office, we will charge in the administration expenses. Now, salary of factory supervisor. Factory supervisor. It is part of your production cost. Word factory use ho gaya. Salary of payroll supervisor. Payroll supervisor is your common office supervisor. It is charged under the head of administration expenses. Rent of warehouse for the storing goods ready for sale.
अच्छा, दो तरह के रेंट आ जाते हैं इसमें। एक आपके पास आ जाता है रेंट ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर रूम, एक आता है फिनिश गुड स्टोर रूम रेंट। जो रॉ मटेरियल स्टोर रूम रेंट है वो तो हमारा जाएगा हमारी परचेज कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में। लेकिन जो हमारा सेल्स जो है, ये एक्सपेंस जो है, जो हमारा वेयर हाउस का एक्सपेंस है, जो कि हमारा रिलेट कर रहा है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो ये हमारा किस में आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि हम यहाँ से प्रोडक्ट को लेके जाएंगे और कस्टमर के हाउस डोर स्टेप पे उसे डिलीवर कर देंगे। लोन इंटरेस्ट सिंपली आपने आप बैंक से लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो दिस इज योर फाइनेंस एक्सपेंस। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, अब वर्ड फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड यूज हुआ है, तो ये आपके पास किसमें जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट में। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर द कस्टमर हु पे अर्ली। अब मैंने ये चीज आपको पहले क्लियर की थी कि भाई डिस्काउंट्स जो है वो कहाँ पे चार्ज होंगे? हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डिस्काउंट करते हैं, तो ये आपके कहाँ पे चार्ज होंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस में। सैलरी ऑफ द चेयरमैन पीए, ये कहाँ पे चार्ज होगी? चेयरमैन पीए, इट्स अ कॉमन कॉस्ट, कॉमन एक्सपेंस, बट नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्री, इट इज योर ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पे चार्ज होंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में। रोड टैक्स लाइसेंस फॉर द डिलीवरी व्हीकल्स, क्लियर कट है, डिलीवरी व्हीकल के कोई भी एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज होंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट फीस, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपको पता है? बैंक से अगर हम अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे लें, अगर बैंक में मेरा 1 लाख पड़ा है, मैं बैंक से 1,05,000 का चेक ले लेती हूँ, तो वो 5,000 जो हमने बैंक से एक्स्ट्रा लिया है वो ओडी में चला जाएगा, ओवरड्राफ्ट में। तो उसके अगेंस्ट जो हम एक्सपेंस पे करेंगे वो हमारे पास किस में आ जाएगा? फाइनेंस एक्सपेंस में। सेल्स कमीशन, सेल्समैन कमीशन जो है वो कहाँ पे जाएगा? सिंपली वो सेलिंग में जाएगा, सेल्स से रिलेटेड है। ठीक है बच्चे, ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब हम अपने अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन।